नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के 845th एपिसोड ऑफ डॉक्टर के मेड टॉक्स में। मैं हूं डॉक्टर आयुषी, आज आपकी होस्ट फ्रॉम द मेडिकल टीम ऑफ मेड टॉक्स। आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जीआई कैंसर्स के बारे में, जिसको फुल फॉर्म में बोला जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स। हमारी जीआई ट्रैक्ट चालू होती है मुंह से नीचे एनस तक। वहां पे जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी तरह के कैंसर्स होते हैं, पूरे इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को रिलेटेड वो सारे ही जीआई कैंसर्स में आते हैं। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सौरभ बंसल, जो हमें बताने वाले हैं कि किस तरह के जीआई कैंसर्स होते हैं, क्या-क्या रीजंस होते हैं इनके होने के, किस तरह के ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स आजकल इंट्रोड्यूस हुए हैं और किन चीजों से किन किन आदतों से हमें दूर रहना चाहिए जिससे हम इन कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकें। सो हम स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट का और चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जीआई कैंसर्स। आज जैसे कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स, उसके कॉजेज, सिम्टम्स। तो वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर सौरभ बंसल का, जो हमारे साथ हैं डिस्कस करने के लिए इस टॉपिक को डिटेल में। वो ही डॉक्टर सौरभ बंसल एक जाना माना नाम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन में दिल्ली एनसीआर में, और उनकी वो आरएमएल हॉस्पिटल से अटैच्ड हैं, एज वेल एज उनकी क्लिनिक है ग्रीन पार्क में बाय द नेम द क्लिनिक। और वो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डिटेल में डिस्कस करने के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स के बारे में। वेलकम डॉक्टर टू द प्लेटफॉर्म, इट्स रियली नाइस टू हैव यू हियर। Hi Ayushi, it's such a nice warm welcome. मेरा सबको नमस्कार, सारे श्रोताओं को नमस्कार। मैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड लैप्रोस्कोपिक कैंसर हूँ, जैसा आयुषी ने बताया, and I was attached to Gangaram Hospital some time back, and now I'm practicing with my own clinic at name of the clinics at Green Park. I'm attached to number of hospitals now, and we are thriving to make the patients of cancer patients' lives better. Right. So Ayushi has given a brief introduction about me, and it's been like past 15 years I've been working in this field. So I had gained a considerable experience, and I hope I can give your answers to all your questions. Yes, I'm pretty sure, sir. Having you on the platform is our pleasure. So first, starting with cancers, जैसे हमने बताया कि जीआई कैंसर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन-कौन से डिफरेंट तरह के जीआई कैंसर्स होते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको हमें बता पाएं हमारे शो। Yes. So गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर्स को जैसे आपने बताया कि राइट फ्रॉम माउथ ट्रैक्ट टू एनस वी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल tract, right? And generally hum as a gastrosurgeons we look from the part of food pipe to anal part, anus part. तो जैसे कहते हैं खाने की नली, फिर उसके बाद आता है पेट, फिर छोटी आंतें और बड़ी आंतें। उसके अलावा हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, पैनक्रियास, लिवर, जहाँ से सारे जूसेस आते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये कुल मिलाकर हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को एक तरह से बनाते हैं। अब इसमें कैंसर्स की बात करें तो हम जनरली इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर जीआई, लोअर जीआई और हेपेटोबिलियरी पैंक्रेटिक कैंसर सर्जरीज। तो जो अपर जीआई कैंसर सर्जरीज होती हैं, अपर जीआई जो कैंसर्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं फूड पाइप या स्टमक का कैंसर्स। जो लोअर जीआई कैंसर्स होते हैं जनरली हमें उन्हें आंतों का कैंसर, बड़ी आंतों के कैंसर को से जाना जाता है। और जो हेपेटोबिलियरी कैंसर्स होते हैं जिनको हम लिवर और पैनक्रियास या गॉल ब्लैडर के कैंसर से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि उसका आगे का पेशेंट को समझाना और उसके सिम्टम्स और आगे के लिए हमारे डिस्कशन जो भी होने वाला है उसका डायग्नोसिस, सिम्टम्स, उसके अकॉर्डिंगली हर एक सिस्टम के थोड़े थोड़े से अलग रहते हैं, तो हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। राइट। बहुत स्वागत है कैलाश जी आपका। अविनाश जी बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर। जिस तरीके से आपने बताया सर कि अलग अलग तरीके से हम डिवाइड करते हैं जीआई कैंसर्स को, किस तो और आपने बोला सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, क्या आप प्लीज सिम्टम्स समझा सकते हैं कि क्या होते हैं अपर और लोअर और इन सिम्टम्स? राइट। सो जनरली जब हम फूड पाइप और स्टमक कैंसर्स की बात करते हैं तो अगर आप सोचेंगे भी तो जनरली हम जब खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा। तो जनरली अगर कोई गठान, जैसे कैंसर क्या होता है, एक गठान होती है, तो एक गठान जब वो
स्टमक या फूड पाइप में बननी शुरू होती है तो वेरी इनिशियल स्टेज में उसके सिम्टम्स नहीं आते। जब वो थोड़ा सा बढ़ने लगती है, जब उसका साइज बेसिकली जब उसका साइज बढ़ने लगता है तब वो स्टार्ट सिम्टम्स देने लगती है। तो यूजली अपर जीआई अगर फूड पाइप की में कोई गठान जैसी बन रही है तो डेफिनेटली पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जैसे कोई चीज जब भी खा रहे हैं तो अटक के जा रही है। जनरली वो पहले सॉलिड फूड के साथ होने लगता है, जैसे आप कोई सॉलिड खाना खा रहे हैं जैसे रोटी सब्जी दाल वगैरह जब खाते हैं तब ये सिम्टम्स ज्यादा लगते हैं। और धीरे धीरे जब वो डिजीज प्रोग्रेस करती है तब वो लिक्विड्स के लिए भी आपको अटकने वाली फीलिंग आने लग जाती है। जब वो डिजीज और प्रोग्रेस कर जाती है तब आपको कफ होना और नमनेस फील होना, रेट्रोस्टेनल चेस्ट के पीछे हैवीनेस लगना, ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। अगर हम देखते हैं गठान जब स्टमक में होती है तो स्टमक में जब गठान होती है तब सिम्टम्स आते हैं जल्दी पेट भर जाने के। मतलब आपने पहले तो आप 2 रोटी खाते थे, अब आप आधी चपाती खाते हैं तब भी आपको लगता है कि आपका पेट जो है भर गया है, मेरे से और खाना नहीं खाया जाएगा। फिर सेकेंडली सिम्टम्स आते हैं कि जब थोड़ा सा खाते हैं तो कभी कभी पेशेंट वॉमिटिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे खाते हैं आधे 1 घंटे बाद वो सारा खाना खाया हुआ वॉमिट हो जाता है। तो धीरे धीरे जिसे कहते हैं हम फुलनेस ऑफ स्टमक एंड अर्ली सेटाइटी आर द की फीचर्स जिसे कहते हैं कार्सिनोमा स्टमक के। तो कैंसर ऑफ स्टमक में जब ये सिम्टम्स होते हैं इनको सिनाक्वेन कहा जाता है कि जल्दी से पेट भरना और आपको ऐसा लगना कि मेरी भूख बहुत कम होती जा रही है और मेरा पेट हमेशा मेरे को भरा भरा लगता है। तब ये सिम्टम्स जब ये लंबे चलते हैं तब इसको डेफिनेटली आपको एक स्पेशलिस्ट को विजिट करके इसको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए रेदर देन डिलेइंग दिस पार्ट, जिस पार्ट पे हम लोग अभी आएंगे। अगर हम बात करें अब नीचे जाते हैं, ये अपर जीआई हुआ। अब हम लोअर जीआई पे जाते हैं तो लोअर जीआई के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स ये होते हैं जैसे बड़ी आंत में जब गठान वगैरह होती है तो अगर दाहिने साइड जो बड़ी आंत की होती है उसमें गठान होती है तो जनरली सिम्टम्स आते हैं डायरिया के। स्टूल्स की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। जैसे नॉर्मली अगर आप एक बार स्टूल जाते थे तो अब वो दिन में 3 से 4 बार आने लग जाता है। एक लंप टाइप की कभी कभी जब ट्यूमर की बढ़ता जाता है तो वो फील होना शुरू होता है। दूसरा क्या है, धीरे धीरे एनीमिया शुरू हो जाता है, मतलब आपको थकान फील होने लगती है और जब आप हीमोग्लोबिन वगैरह चेक कराते हैं तब आपका वो हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है। और लेफ्ट साइड की गठान के सिम्टम्स जनरली ये होते हैं कि आपकी मोशन आने में दिक्कत होती है। मतलब पहले तो आप मोशन ठीक जाते थे बट अब आपको कॉन्स्टिपेशन की फीलिंग आने लग गई है कि अब आपको मोशन करने में दिक्कत होती है। यू स्टार्ट टेकिंग लेक्सेटिव्स एंड ऑल, फिर भी आपको वो दिक्कत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और उसमें भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग एंड म्यूकस डिस्चार्ज वगैरह, जितना जितना ट्यूमर नीचे जाता रहता है म्यूकस डिस्चार्ज की कंप्लेन बढ़ती जाती है। और स्पूरियस डायरिया भी होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कॉन्स्टिपेशन है बट आप मोशन फटाफट मोशन आता रहेगा और हमेशा या तो ये फीलिंग लगती रहेगी कि मेरे को मोशन आ रहा है, आप मोशन टॉयलेट में जाएंगे बट आपको मोशन पास नहीं होगा, राइट। एंड जब बात करते हैं ये जनरली ये कॉमन सिम्टम्स हैं आंतों के कैंसर के। और अगर हम बात करें हेपेटोबिलियरी पैंक्रेटिक सर्जरी जो कैंसर्स होते हैं, जो लिवर और पैंक्रियास के कैंसर्स होते हैं, दे आर काइंड ऑफ ए वेरी साइलेंट कैंसर्स। मतलब वो जल्दी से पकड़ में आ जाए तो हम ये कहते हैं कि मरीज को कि आपकी थोड़ी किस्मत अच्छी थी कि ये जल्दी पकड़ में आ गए, क्योंकि ट्यूमर के सिम्टम्स उसकी लोकेशन पे डिपेंड करते हैं, बहुत ज्यादा लोकेशन पे डिपेंड करते हैं। तो जनरली इन कैंसर्स में सिम्टम्स जो होते हैं, लोग जो कंप्लेन करते हैं जनरलाइज वीकनेस की, फटीग की, बहुत जल्दी थक जाना, वीकनेस की। और अगर कहीं ना कहीं अगर वो ट्यूमर बिलियरी डक्ट के आसपास है तो जो नली होती है, मेन नली होती है जिससे सारा बाइल आता है, तो फिर वो जॉन्डिस के सिम्टम्स वगैरह डेवलप होते हैं। जॉन्डिस हो गया, पेट में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। पर इनमें जो एक जनरल कैंसर के सिम्टम्स होते हैं पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, कुछ सिम्टम्स बड़े कॉमन है, वो कहीं पे भी कैंसर के साथ हो सकते हैं। वो जैसे होना कि जनरलाइज थकान लगना, वीकनेस लगना। पहले आपको लगता था कि आप इतना चल सकते थे, अब आजकल आपको बहुत थकान लगने लगी है, हमेशा सोते रहने का मन करना बिकॉज यू फील एक्सेसिवली टायर्ड एट ए टाइम्स। देन कभी कभी किसी को लो ग्रेड फीवर कंप्लेन करना जिसका कोई कारण समझ में ना आना, पेट में दर्द होना, परसिस्टेंट इंडाइजेशन रहना। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपको कभी कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो ही रही है। कभी आप कुछ खाते हैं तो डायरिया हो जाता है, कभी कुछ खाते हैं तो पेट फूला फूला लगता है, वॉमिटिंग। तो दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स विच अ पर्सन शुड रिकॉग्नाइज। मतलब एक इंसान को अपने आप एक रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये सिम्टम्स जो मेरे में, मेरी बाउल हैबिट्स जिस तरह की हैं,
या मेरी जो हैबिट्स हैं, मेरे को इस तरह के पेन कभी होते नहीं थे एंड अब ये सडनली ये पेन रह रहा है, स्पेशली वो जब वो एटलीस्ट इट इज परसिस्टिंग फॉर मोर देन 3-4 weeks, 2-3 weeks, then you should definitely seek and advise with a specialist. Because if you कभी कभी क्या होता है ना कि ठीक है थोड़ा बहुत पेट में दर्द हुआ, हमने कुछ होममेड रेमेडीज ले ली या ओवर द काउंटर ड्रग्स अवेलेबल रहती हैं, कभी सबके डॉक्टर फ्रेंड्स होते हैं, किसी ने फोन पे व्हाट्सएप करके पूछ लेते हैं, अरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या ले लें, गैस की दवाई ले लें. तो जनरली समटाइम्स इट गेट इग्नोर्ड एट a point of time, and the duration of the symptoms is really important in such cases, because हम लोग ये मानते हैं कि आज की डेट में हर एक कोई भी जो भी कैंसर का ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ है आज की डेट में, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, चाहे वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो, चाहे वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हो, वो सब यही कहते हैं कि डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स एंड कैंसर इज ट्रीटेबल, इट इज क्योरेबल. तो मतलब आप जितनी जल्दी उससे डायग्नोस कर लें, वो जितनी जल्दी जिस जल्दी स्टेज पे पकड़ा जाए उतनी जल्दी उसे आप एक राइट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि गाइडेड ट्रीटमेंट फॉर्म कर सकते हैं जिससे वो कंप्लीटली क्योर हो सके. So I think that is the whole crux of the symptoms where we discuss. I think अगर इसको मैं टेक होम मैसेज में कन्वर्ट करूं तो मैं यही कहूंगा कि any symptom which was not there and which is persisting for a longer time, like indigestion, early satiety, vomiting, change of bowel habits, loss of appetite, कहीं पे persistent pain abdomen, any lumpish feeling, any distension of abdomen, like पेट फूला फूला लगना. So these are the sine qua non symptoms कि कहीं ना कहीं आपको you should look for your at least nearby specialist checkup before you go to the oncologist also, or if you have the facility to go to the oncologist or consider a physician checkup or a surgeon checkup, it's absolutely fine, because it's really important that you don't delay your diagnosis. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Right. अविनाश जी सर आपको गुड इवनिंग बोल रहे हैं. He has a question. He says, can H. pylori infection cause cancer? H. pylori infection can cause cancers. Persistent H. pylori, chronic H. pylori infections are associated with stomach cancers. एंड इसलिए हम लोग जनरली जिनको इनके क्रोनिक एच पायलोरी के जो सिम्टम्स रहते हैं वो जनरली हम लोग टर्म करते हैं डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन. तो उसमें ये सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को ब्लोटिंग बहुत रहती है, पेट में जलन रहना, फुलनेस रहना, ऐसे सिम्टम्स होते हैं जब वो बहुत टाइम से होता है. तो जनरली इट्स अ वेरी सिंपल एंडोस्कोपी टेस्ट जिसको बायोप्सी करके वी प्रूव दैट इट्स एच पायलोरी इन्फेक्शन एंड वी गिव द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट. And once it's eradicated, it reduces the risk of cancer formation, because H. pylori infection से क्या होता है कि hyper acidity की state हो जाती है, which causes certain changes in the stomach mucosa and wall, which again lead to the formation of, which becomes a harbor for formation of cancer cells. So it is associated with stomach cancers, but yes, it is more associated with, I will say कि classically scientifically they say lower and middle socioeconomic class, but then again अब लोग हम we are working in a well developed, now I will say well developed areas, but then again we say nowadays because of our eating habits, so much of ordering food from outside and persistent change in eating habits, and so we nowadays I feel personally there is no differentiation much of class left, because we see persistent H. pylori, chronic H. pylori infections in a lot of younger people even, which belong to a very good socioeconomic class also. So kahin na kahin there is a demographic shift in our eating habits, and the availability of the things are so available because of the Zomato and Swiggy. So I feel that people are more prone to eat what they want to eat, so where we don't pay much attention also. That's true. That's बिल्कुल सही कहा सर आपने. गुरविंदर जी पूछ रहे हैं कि सर gastrointestinal cancer is also named as colon cancer. Please tell. See, gastrointestinal cancers को लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, because some say it is a stomach cancer, some say it's a colon cancer, और कहीं भी एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो
किसी को कुछ और क्या हुआ तो उसके तो पेट में कैंसर हो गया था। तो हमारे लिए पेट क्या है, हिंदी में पूरा पेट है, इट्स नॉट एन एब्डोमेन एक्चुअली। और जनरली साइंटिफिकली इफ यू लुक इनटू द our English language, where our textbooks are and where the whole studies have been made. So stomach is just a part of the gastrointestinal tract where the food goes and stores and it starts the digestion starts. But then again, uh, colon cancer is absolutely different in that. It is just a part of gastrointestinal cancer. बिल्कुल बिल्कुल। सो सर, जिस तरीके से आपने बताया कि कौन कौन से तरह के कैंसर्स होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, अब अगर हम आते हैं कि क्या अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास, किस तरीके की ट्रीटमेंट प्लान आप उनको देते हैं और किस तरीके से वो प्रोग्रेशन होता है? अगर आप थोड़ा-सा ट्रीटमेंट पे हमें एक्सप्लेन, पहले तो हम डायग्नोसिस पे आते हैं, फिर आप डायग्नोस कैसे करते हो एंड देन सब्सिक्वेंटली ट्रीटमेंट? यस। Yes. So as I said that जैसे हमने अपने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक को शुरू में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उसी हिसाब से हम लोग अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट्स का डायग्नोसिस के लिए आगे वर्कअप करते हैं। तो जनरली इफ वी आर सस्पेक्टिंग कि स्टमक या फूड पाइप का कैंसर है, खाने की नली या पेट का कैंसर है, तो हमारा फर्स्ट टेस्ट, जो अगर सस्पिशन भी होता है, तो हमारा फर्स्ट टेस्ट इज अपर जीआई एंडोस्कोपी। तो हम एक अपर जीआई एंडोस्कोपी एक ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है जिसमें एक कैमरा, एक एंडोस्कोपी ट्यूब होती है जिसमें आगे एक कैमरा फिटेड होता है, विच इज हार्डली 3 to 5 मिनट्स प्रोसीजर विच इज रन ऑन ओपीडी बेसिस, एंड जिसमें आपको कोई भी गांठ वगैरह होती है वो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन हो जाता है उसका, और उसी टाइम हम उसकी बायोप्सीज वगैरह ले सकते हैं। ये होता है कि आपने एक डायग्नोसिस एस्टैब्लिश किया, फिर अगर आपको लगता है कि अब ये गठान आ गई है स्टमक या फूड पाइप में, तो उसके बाद वो किस स्टेज पे है, दैट इज अवर नेक्स्ट जॉब टू डू। वंस वी हैव दैट डायग्नोसिस कि भी इसमें बायोप्सी में पॉजिटिव आ गया है, अब जनरली पेशेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर ये ठीक तो हो जाएगा, ये कौन सी स्टेज पे है, ये क्वेश्चन होता है। तो जनरली फॉर दैट स्टेजिंग पर्पसेस वी नाउअडेज डू CT स्कैन, एंड इफ वी फील दैट देयर इज अ स्प्रेड या डिजीज कहीं और फैली हुई लग रही है, तो वी ऑलवेज डू अ पेट CT स्कैन वेरी लिबरली नाउअडेज, तो जिससे हम एक स्टेजिंग का अंदाजा करते हैं। तो इस तरह से तो हम ये अपर जीआई कैंसर्स में जनरली इट इज ऑलमोस्ट एंडोस्कोपी इज अ वेरी beautiful OPD based procedure which is completed so fastly, where you can really diagnose the tumors at early stage. Even हम लोग कितनी बार very early polyps भी डिटेक्ट करते हैं जिनको एक सिंपल मेथड से, एंडोस्कोपिक मेथड से ही पॉलीपेक्टमी वगैरह भी कर देते हैं हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रेंड्स वगैरह। सो वी कैन प्रिवेंट द डिजीज एट टू फॉर्म अ बिगर डिजीज एट द अर्लियर स्टेज। So since हमारी population बहुत wide है, so we don't have a very uniform screening programs as जो screening programs एक certain age के बाद हम लोग western population या Japanese population में they follow, जहाँ पे जिस country में जिस cancer की prevalence बहुत high है, they had certain screening protocols for that. But in India, because of the, you can say, the logistics, because of the not big availability of the machineries and doctors everywhere, so it becomes really difficult to establish such screening procedures at such level. And so when we are talking about diagnosis now, next thing is that lower GI tract. तो लोअर GI ट्रैक के जब भी कभी सिम्टम्स लगते हैं, तो सपोज पेशेंट एनीमिया का, डायरिया एंड ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स से आता है, जब पेशेंट बोलता है कि मेरे 1 महीने में कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, या परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन चल रहा है बट मैं लेक्सेटिव्स ले रहा हूँ बट इट इज गेटिंग वर्सन ओनली, या मेरे को डायरिया वर्सन होने लगा, एंड समटाइम्स आई फील माय स्टूल्स आर गेटिंग ब्लैक, समटाइम्स आई कैन सी ब्लड इन द स्टूल्स. So that time we generally advise them to do a colonoscopy. Colonoscopy एक same thing like endoscopy. It's a visualized examination by using a tube which has a camera at the head, and it can be performed on the OPD basis again with the इसमें colonic bowel preparation करना पड़ता है ताकि मोशन कोलोन की जो एनाटॉमी है वो बिल्कुल क्लियर रहे, एंड वी कैन एट द सेम टाइम, अगर हमें कोई गांठ वगैरह दिखती है तो हम उसकी बायोप्सी वगैरह लेके उसको एग्जामिनेशन के लिए भेज सकते हैं. वंस वी इस्टेब्लिश अ डायग्नोसिस कि ये गांठ वगैरह है, एंड कभी कभी तो बहुत टाइम्स पे होता है कि जब बिल्कुल एनएल कैनाल के आसपास जो ट्यूमर्स होते हैं तो उनको तो ओपीडी पे बाय
जस्ट मैनुअल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन ही पकड़ में आ जाते हैं, तो उनकी बायोप्सीज तो हम तब सिग्माडोस्कोपिक बायोप्सीज उसी टाइम पे कर देते हैं। तो वंस वी इस्टेब्लिश द डायग्नोसिस, देन एज आई टेल कि जब हमारा एक डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाता है तो हमें एक स्टेज इस्टेब्लिश करनी होती है डिजीज की, टू प्लान आउट द ट्रीटमेंट। तो टू प्लान आउट द ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जनरली सीटी स्कैन कराते हैं, विच वी गिव ओरल एंड आईवी कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन टू डिजीज का एक लोकलाइजेशन, डिजीज की एक एक्सटेंट को जानने के लिए कि डिजीज वहीं तक लिमिटेड है या कहीं और फैली हुई है, कोलन की कौन सी लेयर में आ गई है, अगर हम उसको बहुत डीपर जो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं देखने के लिए, एंड उसका कोई स्प्रेड लिम्फ नोड्स जो जहाँ पे पूरे इंटेस्टाइन का फ्लूइड ड्रेन होता है, सारा एक सर्कुलेशन मेंटेन होता है, उस तरह से लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं, उसमें ड्रेनेज है कि नहीं है, तो ये सब चेक करते हैं। एंड स्पेशली कोई ट्यूमर जो है वहाँ से फैल के लीवर में तो नहीं आ गया है, चेस्ट में तो नहीं आ गया है, तो दैट ऑल्सो वी चेक। तो एंड इफ वी फील दैट देयर इज अ सस्पिशन कि वो कहीं और फैला है, तो देन वी डू अ पेट सीटी स्कैन टू एस्टैब्लिश दैट it is a spread disease, because we need to plan the treatment and tell the patient what exactly you are going through and what will be our next plan to do so far. So staging becomes a very important part after diagnosis. जब हम हेपेटोबिलियरी कैंसर्स की बात करते हैं, तब जिसमें लिवर कैंसर्स और पैंक्रेटिक कैंसर्स आते हैं, जब ऐसे कोई सिम्टम्स सस्पेक्ट करते हैं कि जॉन्डिस है या अनआइडेंटिफाइड अनस्पेसिफाइड एब्डोमिनल पेन है, वेट लॉस है, या हमें लग रहा है कि हम सस्पिशन कर रहे हैं बट वी डोंट नो वेयर कुड बी अ ट्यूमर बी, वेयर कुड बी another problem, there could be the problem is lying. So sometimes we directly use help of a CT scan after doing initial ultrasound screening, because most of the times what we see in our practice is, more than half of the times I will say that ultrasonography is a very a kind of a screening test. At a times 50% of the times you generally don't pick small tumors in ultrasound, and it's very hard for ultrasonography to pick up a tumor in a, especially in the area of pancreas or bile duct area. So generally we use that time a CT scan, and liver के भी small tumors generally ultrasound में pick नहीं होते. So we use a CT scan directly. If we detect any lesion which is suspicion कि ये गांठ जैसा लग रहा है, ये हो सकता है छोटी सी गांठ हो, इसी तरह डायग्नोस होते हैं ज़्यादातर पैंक्रेटिक कैंसर्स, तब हम ये एक बार जब एक बार हो जाता है कि ये कुछ डाउटफुल लीजन है, तब जनरली हम हेल्प लेते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का. अब वी हैव दैट लेटेस्ट टेक्निक जिसमें एंडोस्कोपी जब करते हैं उसमें आगे अल्ट्रासाउंड प्रोब लगा होता है, जिससे हम बायोप्सीज वगैरह पेट के अंदर जाके ले सकते हैं. सो ईयूएस जो है आजकल सभी सेंटर्स पे, सभी अच्छे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, एंड आवर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रेंड्स आर रियली गुड एट doing that, and वो लोग diagnosis once they take biopsies we establish the diagnosis. So generally CT, the initial CT, once the diagnosis is confirmed, then the initial CT gives, we just reevaluate the initial CT to look for that key, what is the stage of the tumor, and if we feel like we want to do further investigation like MRCP or PET CT scan to know what the depth of the tumor, what is the exact extent of the tumor, we generally take help of that using an MR or a PET CT scan in that kind of tumor. So MRI has a role in this hepatobiliary tumors, and especially rectum के पास, जो anal canal के पास के tumors होते हैं, उसमें MRI का बहुत ही significant role रहता है to plan the further treatment, because they help us to exact the exact कितनी size है, कितनी penetration है tumor के tissue के अंदर. So if we want to plan a radiotherapy first, or if we want to plan a surgery first, so that is based on all this kind of investigations. Generally we take all this tests into consideration before planning all this tests. And there are certain blood tests, but they are not usually used for diagnosis, and they are used for आपका treatment response देखने के लिए. They are called tumor markers, which we हम लोग कराते हैं pertaining to जिस टाइप का ट्यूमर है, और उसको उसके हिसाब से यूज करते हैं ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स देखने के लिए कि अगर आपने कोई कीमोथेरेपी दी या रेडियोथेरेपी दी या सर्जरी करी, तो whether they are decreasing or not decreasing. So they are mostly used to check the tumor your treatment response. हमारे एक गेस्ट आपसे पूछ रहे हैं सर कि एवरी ऑल्टरनेट डे आई हैव टू टेक राजो 20. Without medicine, I have severe acidity and bleaching and belching issue.
So basically acidity issue. What Hmm. may be the reason? Appetite and stool motion are normal. So he must be having a most likely a gastritis issue. It could be H. pylori or non-H. pylori related. Mm, There are mm, multiple factors to gastritis itself. So he should definitely visit a nearby gastroenterologist or any or a facility where endoscopy is available, and he should check himself with a getting an endoscopy done and take a proper guided treatment rather than taking that. That's what I said initially, that most of us we take OTC drugs which mm, are over the available counters drugs. We easily take Razod, Pantoprazole D, and try to ignore our symptoms. And if I always say that if you have persistent symptoms, please get a proper mm. checkup done. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Yeah. Durga Sharda ji says best regards from NS Sharda to you, sir. Thank So you. yes, तो Thank you, sir sir. yes, further going, हमने अब समझा कि क्या क्या डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं. नाउ अंडरस्टैंडिंग क्या क्या ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स और किस तरीके से आप ट्रीटमेंट प्लान करते हैं किसी भी पेशेंट का, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में हमें ब्रीफ शेयर कर पाएं. So, regarding treatments, cancer is always a multidisciplinary management. मतलब regardless of any organ you talk about, if you अगर हम बात करेंगे chest cancers के बारे में, if you talk about gynecological cancers, if you ask a urologist about urological cancer, head and neck बिल्कुल. surgeons के बारे में, and same thing with GI cancer. So generally, we generally play in between three roles, three treatments options are always there. तो पहले अगर मैं आपको एकदम स्ट्रेट भाषा में समझाऊं कि पहले हमारे जो इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं, उसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कैंसर क्योरेबल स्टेज में है कंप्लीटली, या वी हैव टू मैनेज अ कैंसर बाय डिक्रीजिंग the load of cancer disease and prolonging the life of the patient, और उसके symptoms भी कम रहें, तो that is called as a palliative management. तो उसे palliative intent कहते हैं. और एक होती है curative intent. Curative intent ये होती है कि हम ये देखें कि पेशेंट को कैसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है. अगर वो उस स्टेज पे है कि इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, तो जनरली वी प्लान अ curative intent with that. तो curative intent की अगर हम बात करें, so if we take this curative intent as a first thing and palliative intent as a second thing, तो curative intent की पहले हम बात करेंगे. तो curative intent में ये रहता है कि once the cancer is diagnosed, the staging is very important. Once we diagnose with the stage, we plan the treatment accordingly. Say some tumors, जैसे अगर upper GI tumors की बात करें, तो अगर वो एक stage 2, stage 3 पे आ जाते हैं, तो generally we give a chemotherapy to prevent the further spread of the tumor. ठीक है, initially chemotherapy, and some locations पे we also use radiotherapy, like gastro stomach और esophagus के junction के tumors होते हैं, and then we plan for a surgery. ठीक है, once we plan for a surgery, then we again have to go for a chemotherapy, right? So generally it's कोई भी जो treatment plan होता है, it's decided between a medical oncologist, a surgeon, and a radiation oncologist. So it's a proper team management where patient can be best benefited with which modality of the treatment. So generally we have three options: chemotherapy, radiotherapy, and surgical management. See, all these three managements I always feel are equally important because they all together make you win the battle of the cancer. It's not only one thing which can make you win the battle of the cancer. अगर कोई ये सोचेगा मैं कीमोथेरेपी तो करा ली, अब कोई जरूरत नहीं है, it is not right. मैंने सर्जरी तो करा ली, मेरे को कीमोथेरेपी की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब आप तो बोल रहे थे पूरा ट्यूमर निकल गया. तो it doesn't works like that, because cancer का spread जो होता है वो micro spread होता है, which cannot be seen through the eyes, which cannot be detected by the current investigation modalities. It's like a micro mm spreads, micro mm के cells होते हैं which has spread. तो generally we to kill that cancer cells we use chemotherapy. और जो डिजीज जहाँ पे होती है और जो उसका लोकल स्प्रेड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग सर्जरी का यूज करते हैं. एंड जो एक डिजीज को छोटा करने के लिए, श्रिंक करने के लिए और उसके स्प्रेड को उसी एरिया में बढ़ाने के लिए टू सर्टेन एरियाज जहाँ पे रिकमेंडेड है वहाँ पे हम रेडियोथेरेपी का यूज करते हैं. तो जनरली इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स rather than only one thing which can make you win the game. So we have to follow the certain guidelines. Generally we follow NCCN guidelines or European guidelines. हमारी कंट्री में ज़्यादातर हम लोग NCCN guidelines follow करते हैं, and certain institute based protocols होते हैं. Institute based protocols are like with high volume centers की जिनके experiences are like amazing, in thousand numbers of patients they are seeing for
like only colon cancer. So they generally have their own protocols based on the population based. So they find that their results are better with this. So they start doing that. So I feel it's once you have been diagnosed, you should have been faith in your the entire team that who is working behind you. They will to take a great decision in all favor of you. So and we should accept that decision and positively move ahead to get rid of all these things. And usually once you have a cancer at that stage where you need a chemotherapy and a surgery and a radiotherapy and plus a chemotherapy, then generally it takes around a duration of 6 to 8 months to complete a treatment. Say if you have been diagnosed accidentally by a very early stage, जहाँ पे एक लोकल पॉलिप टाइप है, छोटी सी गठान है, छोटा सा लीजन है, which is still not formed a proper tumor or which is very early stage tumor, maybe a T1 lesion, जिसे हम कहते हैं कि T1 से T4 staging होती है. So then in that cases sometimes we also use endoscopic methods, especially in the stomach part and colon part, where our gastroenterologist friends, they do a wonderful job of removing that local tumors, so the patient doesn't have to undergo a major surgery on that part. बिल्कुल बिल्कुल. Right. तो सर आपसे दुर्गा शारदा जी पूछ रही हैं कि ना इज फास्टिंग हेल्पफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? Fasting is absolutely not helpful, I will say, because uh, in fact, I will say that patients need a high protein, high carb diet to maintain that level of energies and strength in your body, because your cancer cells eat a lot of nutrition, and secondly, your body needs more nutrition once you are undergoing treatment. So we strongly advise to take a lot of antioxidants, lot of maintaining a balanced diet, I will say, rather than not eating too much, but maintaining a balanced diet which is rich of antioxidants and proteins, I will say. बिल्कुल बिल्कुल. समरीन फातिमा जी पूछ रहे हैं, सर कैन यू टेल मी व्हाट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड व्हाट इज द क्योर ऑफ हिएटस हर्निया इन GERD? As I feel difficulty in swallowing, as endoscopy done on which hiatus hernia is there. Okay, so it depends upon it is now entirely a different scenario which we are talking about. Yes. अगर hiatus hernia की बात करें तो hiatus hernia is in part of the stomach going into the chest wall because of the जो हमारा जंक्शन होता है स्टमक और चेस्ट का जो जंक्शन होता है, इट इज यूजुअली इनसाइड द एब्डोमेन, इट्स लाइक इन अवर एब्डोमेन, बट जहाँ पे जुड़ता है. बट कभी कभी व्हेन यू आर there are multiple factors to it. Generally females after post pregnancy, a person gaining extreme weight gain जब जल्दी हो जाता है, या स्मोकिंग, अल्कोहल, चूइंग टू मच ऑफ चॉकलेट्स एंड मेन्स, एंड बचपन में जनरली बच्चों में ये वॉल लूज होता है, which once they grow as adults they becomes the wall becomes snugger, but then again sometimes वो wall थोड़ा सा ढीला रह जाता है and patient slowly started developing hiatus hernia. तो हाइटस हर्निया की सी अगर इफ इट इज सिम्टोमैटिक फॉर अ वाइल, ऑन एंड ऑफ सिम्टोमैटिक है एंड यू आर सिम्टम फ्री इन बिटवीन, then you can definitely continue with your routine over the counter medicines. But then again, if you have certain changes in endoscopy, जिससे कहते हैं कि reflux esophagitis है, which is grade B, grade C, with a sizable hiatus hernia, and your symptoms are such that you are, if you don't take a medicine, then you are again having a reflux symptoms for, if you skip even a single dose and you are having a reflux symptoms after 1 day or 2 days or immediately, then you should consult like we do a lot of regular anti-reflux surgeries. So I strongly recommend because you see this reflux problems are more associated with a younger group of people, and once you do anti-reflux surgery, you get a wonderful results, you are off medicines, and it also prevents the long-term risk of developing in gastroesophageal junction tumors, जो stomach और esophagus के junction पे cancers होते हैं, which happens, the most common cause itself is a chronic reflux problem, which books itself say that over the course of 10 to 15, 20 years, someone can have chronic reflux problems who can develop a gastroesophageal junction tumors. बिल्कुल बिल्कुल. सो विनायक जी आपको बहुत बहुत गुड इवनिंग. दुर्गा शारदा जी फिर से पूछ रही हैं सर आपसे, ओबेसिटी रिडक्शन रिलीफ इन हिएटस हर्निया. Yes, definitely there are certain methods to do that, because
obesity is one of the causes of hiatus hernia. And if you see obesity with hiatus hernia, then my first advice to all the patients, we advise them to lose the weight. And if the person is like say very obese and he's considering himself to lose weight via surgical modality, then we combined weight loss surgery with anti-reflux surgeries, and the surgeries, the modality of the surgery become different in that cases. So we do a regular bypass in such cases, so they definitely get relief from the reflux symptoms, as well as the weight reduction becomes the goal of the treatment. Thank you so much, sir, to discuss this, all of these questions. So, sir, now coming back to cancers, GI cancers that we were discussing. तो GI cancer का जिस तरीके से हमने डिटेल में डिस्कस किया कि क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, क्या कोई ऐसे किस तरीके से, बिकॉज हमारे सारे जो श्रोता सुन रहे हैं, क्या क्या ऐसी चीजें होती है जो प्रिवेंट कर सकते हैं GI कैंसर्स को, और कुछ ऐसे स्टेप्स जो लाइफस्टाइल स्टेप्स हमें लेने चाहिए इनको प्रिवेंट करने के लिए? Yes, as such, it is like you prevent the cause of it and you make that change. It's simple. Correct. The causes are the preventive measures. So as we discussed, like all the good things in our life are really bad actually once we do it in excess. I always say, and I always started believing in it. All the fancy looking things at the times in excess turns bad. Say, the most common things which we see in our cities is like heavy smoking, heavy alcohol intake, and very less physical activities. Obesity are definitely preventable causes which a person can handle himself. He can restrict himself to all these things. So what I mean to by dietary habits is like eating a lot of red meat, eating a lot of is a very causative factor for colon cancer, especially that was there in Western population earlier. If you see American and Europeans, but we are surprised with the such a surge in colon cancers in India also over the last 10-15 years. It was not that common in India. It was there. It is among the common cancers in GI cancers, but nowadays you see that so frequently. And so this is one thing where you can restrict yourself, limit yourself to certain things, like consumption of alcohol. Just a second, everyone. I think yes. Yeah. Now, sir, yes, we lost you. So consumption of alcohol, consumption of smoking, eating red meat, and eating raw vegetables at a times. Wash your vegetables properly, and eating high fat diet. High fat diet includes a lot of junk food, which includes a lot of cheese, a lot of again a lot of milk products and all that. If you over excess it, then you definitely have a higher risk of fat-based cancers, like in females, breast cancers, and again colon cancers. Smoking itself is a causative factor for stomach cancers and pancreatic cancers. Alcohol itself is a causative factor for stomach and liver cancers. So somehow these factors do play a role. Secondly, environmental factors like which are related to this thing is, which definitely in GI system, which we see is a lot of fertilizers being used in certain part of country, which definitely induce toxins in vegetables and fruits. So there is a belt in northern part of India where we see a lot of cancers related to GI because of the food they consume. And high fat dairy products is again a major cause for the cancer. So these are the factors which we can really prevent ourselves. Maintaining a regular physical activity, which is really important. Cutting down the excess weight, which is really important. Maintaining a physically healthy weight. We don't need to be, you should be physically active and maintaining a healthy weight. That is really important. Then you can, in females especially, cervical cancer is very common. They can easily opt for HPV vaccines nowadays. It's available in India. And they can prevent the most common cause of cancers. You can consult your gynecologist and get an HPV vaccine done. So these are small things where we can take small certain steps.
Certainly. And then if you know that your family history have a strong cancer, like your father had your mother or your grandfather had colon cancer, then you can definitely go for a screening colonoscopy after 40 years of age to look for it, whether we can, you have certain predisposing factors for cancer. So you can always go for a screening colonoscopy by bi-yearly or something, or an upper GI endoscopy bi-yearly or something. And it's not bad that many hospitals have come with annual checkups and all those things, in which they include a basic checkup plus an ultrasound and all those things, and a physical examination and a detailed examination by the preventive health specialist. So generally, if they feel anything suspicious, they generally refer to a specialist uh, uh, to look out into that matter, because it's better, as I said, that we can diagnose it earlier than later. That's true. Yeah. That's true. So, Yeah. sir, Vinita ji आपसे पूछ रहे हैं कि sir, is it okay to use wedge pillow for sleeping in case of GERD and hiatus hernia? It is okay to use Wedge pillow, WEDGE, wedge shaped which pillow. pillow? Generally, GERD and hiatus hernia patients, you need to have a high pillow because it prevents the reflux overnight. So that is the only recommendation. The wedge shape doesn't have any. I don't think so. It should have any impact on it. It's just the height of the pillow where you sleep, and it automatically starts increasing. If you see the reflux patients, they will, because they start feeling comfortable in that. So they generally start keeping two pillows or a higher width pillow. They start taking in themselves. Okay. Yeah. So, दुर्गा शारदा जी आपको थैंक्स डॉक्टर साहब बोल रहे हैं. साथ ही साथ वो आपसे पूछ रहे हैं कि सर फाइन फ्लोर हार्मफुल? Why such foods are not banned yet? Is Fine flour. So when they mean fine flour is basically, I think so, maida is what they want to clearly mention. जो okay. जो fine So flour होता yeah. No. So uh, basically, see, nothing is harmful if you take in a moderate amount. Even liquor is also for recreation, but we never recommend it. But then again, if taken in very less amounts, it's okay. Maida is same. Like if you see Western countries, they don't have wheat and rice itself. There are many countries which depend on maida type breads. है. अंशु जी So आपको बोल रहे हैं कि प्लीज आप हिंदी में बोल सकते हैं क्या? जस्ट अ स्मॉल अच्छा जी, रिक्वेस्ट. हाँ. राइट राइट. तो जैसे हमने आपका क्वेश्चन है, जैसे मैदा मैदा को बैन नहीं किया जाता. मैदा ऐसे एज सच हम बोलते हैं कि मैदे को बैन कर देना चाहिए. मैदा आप अगर देखोगे तो सारी जितनी भी ब्रेड्स वगैरह बनती हैं सब मैदे से ही बनती हैं. एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया वेयर वी हैव, हम लोग जितना वीट गेहूं यूज करते हैं या चावल यूज करते हैं खाने में, वैसा वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है. एक्चुअली दे उनके लिए डाइट में मैदे से बनी हुई ब्रेड्स एंड मल्टीग्रेन ब्रेड जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, तो वही सब यूज करते हैं. सो एज सच इट इज, अगर हम बात करें कि ये डायरेक्टली कैंसर करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट यस, थोड़ा मैदा इज ए रिफाइंड, मैदा थोड़ा रिफाइंड फॉर्म होता है, तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है. एंड इट इज देयर आर, ऐसा है ना कि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसके कारण आर कॉजेज ऑफ कैंसर. जैसे अब पिकल्स हैं, अचार हैं, जो हाई सॉल्टेड पिकल्स होते हैं, वो कॉजेज होते हैं, वो स्टमक कैंसर का कारण होते हैं. तो स्टमक, अब उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज को बैन कर दें. हम अपने आप से उस चीज को लिमिट कर सकते हैं. अल्कोहल लिवर कैंसर करती है, वो सबको पता है, लिवर खराब करती है. बट आप उसको बैन नहीं कर सकते, बट आप अपने आप से उसको मना कर सकते हो. तो ये जिंदगी में, मतलब देयर आर 1000 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर एवरीथिंग. बट आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो आपके हाथ में है. बिल्कुल लिमिटेड चीज में लेना, व्हाट यू मेंशन्ड बिफोर. तो सर, कुछ ऐसे चैलेंजेस आप शेयर करना चाहेंगे पेशेंट्स के जो जीआई कैंसर के ट्रीटमेंट्स अंडरगो करते हैं, और किस तरीके से उस चीज को मैनेज करते हैं? थोड़ा सा उन हमारे श्रोताओं के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं नॉर्मली पेशेंट के ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड पोस्ट द ट्रीटमेंट फॉर दीस कैंसर्स. So once say a patient is, once we tell them that that you are having such a problem, and what we need to do, go with this kind of a treatment ahead. So it is, मैं जो समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा important चीज़ है कि
पेशेंट और उनके रिश्तेदार इस चीज़ को समझें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिश्तेदार ये बोलते हैं कि आप पेशेंट को मत बताइए, पेशेंट से मत बताइए कि क्या सर्जरी होगी या क्या ट्रीटमेंट होगा। मैं ये समझता हूँ कि इतना ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट खुद से जाने और पेशेंट उसको स्वीकार करे और समझे, जितना रिश्तेदार समझते हैं कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और हम उसको ट्रीटमेंट कैसे देने वाले हैं। तो पहले उनकी वो शुरू में ही वो एक अंडरस्टैंडिंग जब वो डेवलप हो जाती है, when वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो वो उस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। अब जनरली जो हम प्रॉब्लम्स पेशेंट सेंड से फील हमें सुनने को मिलती हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, दिस इज देयर आर 2-3 थिंग्स कि एक्सेप्टेंस नहीं होती पहले डिजीज की, कि एक्सेप्टेंस इन द सेंस कि उनको लगता है कि अच्छा ऐसे बोला उन्होंने तो ये बोला था, फिर दे स्टार्ट रनिंग अराउंड ट्राई टू टेक, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है कि हम सेकंड ओपिनियन लें, थर्ड ओपिनियन लें, फोर्थ ओपिनियन लें, बट देन अगेन आई मैं जितने जानता हूँ, मेरे जितने कलीग्स हैं, हम लोग दिल्ली में जितने लोग काम कर रहे हैं और इनफैक्ट इंडिया में भी काम कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, दे रिकमेंड मोर और लेस सेम थिंग्स। इट्स जस्ट एन इंस्टीट्यूशनल बायस होता है कभी कभी कि हम ये पहले करते हैं, ये पहले करते हैं। बट देन अगेन एक ट्रीटमेंट को जिसमें जिस भी डॉक्टर में आपका फेथ है, उस डॉक्टर के आप टीम में आप उनका ट्रीटमेंट एक फॉलो करिए। एंड जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग आजकल, वो एक होती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एक बहुत बड़ा रहता है, बिकॉज एक नॉर्मल फैमिली, आई विल से एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर क्लास फैमिली के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू afford at a times a treatment of cancer sometimes, because the chemotherapy, the cost of chemotherapy, the cost of medicines is the cost of surgery is a bit expensive in the private sector, but it's not that expensive as compared to, अगर हम उसकी कॉस्ट की बात करें तो इंडिया में जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है बहुत कम है। वेस्टर्न सेक्टर और हम एशियन सेक्टर की भी बात करें तो इट्स वेरी लेस, इट्स ऑलमोस्ट 1/6 या 1/7 कॉस्ट है। तो इंडिया में अभी भी जो प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो ट्रीटमेंट ऑफर होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर्स में दे आर ऑलमोस्ट फ्री एट अ टाइम्स, एंड they are overburdened at the same time, because उनके लॉजिस्टिक्स लिमिटेड हैं, डॉक्टर्स लिमिटेड हैं, बट दे आर सो ह्यूज इंस्टीट्यूट्स अगर उनकी बात करें, बट they have their own limitations. But then again, that are the options, that is how the healthcare system is in India. Either we have a government option, either we have a private option. So financial limitations is one consideration, but उसका solution यही है कि you have to, आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस ब्रैकेट तक आप कंफर्टेबल हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स, आप एक हॉस्पिटल में अगर इतना ट्रीटमेंट है तो उससे थोड़ा सा फैसिलिटी वाइज कम होगा, तो उसमें थोड़ा सा शायद ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पे ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम होती है। एंड आजकल बहुत सारे फाइनेंशियल प्लेयर्स हैं वेयर दे ऑफर अ ट्रीटमेंट where you can afford treatment in EMI also. So lot of things, government has also taken initiatives in that. So private sectors are also equally taking a lot of initiatives in that to help out the patients with their financial things. Second thing, financials के अलावा जो patients feel करते हैं कि how we will mental strength. I will say that overall the feelings of the family once they know that कि इनको हमारी फैमिली में किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो ये एक ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि फैमिली के अदर मेंबर्स समझें कि ये डिजीज जो है, अगर वो क्योरेबल स्टेट पे है या पेलिएटिव स्टेट पे है, तो हमें पेशेंट के साथ रहना है। वट एवर इज नीड हिज, उस टाइम पे पेशेंट को सबसे ज़्यादा मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, टू गो दैट 6-8 months or a year or so for that treatment itself. और कभी-कभी सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद भी क्योर हो जाते हैं, तो 1-2 महीने की बात होती है। तो ये एक मेंटल सपोर्ट अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सर्टन hospitals, and there are certain private networks who are coming up with psychological and diet services which provide to the patients to give them that support, that kind of a support, creating that kind of a support ecosystem to that patient. The third problem is that हम जो फील करते हैं पेशेंट के एंड से एडहेरेंस मतलब होता है कि जैसे कोई पेशेंट को मैंने बताया कि आपको ये कीमोथेरेपी लेनी है, बट कभी कभी वो लोगों की बातों में आए कि अरे
वहाँ पे तो कोई दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हैपेंस, वो मैजिक करते हैं, कुछ भी करते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ quackery thing which we don't really promote it, and हम पेशेंट्स को ये बोलते हैं, they lose their important time in this. I have seen lot of my patients going to different places and trying that kind of a treatment for couple of months, and this is quackery. This is not scientifically proven things. I will not that go against it, because सबके अपने अपने beliefs होते हैं, तो हम किसी के beliefs को change नहीं कर सकते. बट मैं ये कहूँगा कि एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज को ना करने से, और मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स आई हैव सीन दे एंड अप रियली बैडली, बिकॉज आप वो एक रेगुलर ट्रीटमेंट का इम्पोर्टेंट टाइम आप छोड़ चुके होते हो, तो कहीं ना कहीं यू लूज समवेयर इन दैट बैटल. That's true. दुर्गा शारदा जी इसमें पूछिए कि सर इंश्योरेंस कवर भी होता है? ऑल इंश्योरेंस, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस हैं, दे कवर योर एनी डिजीजेस इफ इट्स इफ यू हैव क्रॉस दैट कंपनी का जो भी आपका पॉलिसी है उसके हिसाब से कवर कर चुके थे. आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स who are coming to private sectors have holding good insurance policies. So I will say it's a bracket of 50-50 nowadays in metro cities. At least 50% of the people have insurances. Insurance. Durga Sharda ji, ये भी पूछे, treatment of cancer gives time to plan out for family. Does it give time, the treatment of cancer? Plan a family? Plan out for family. So, for a family to get over the whole thing, I think so. This is what she wants to tell. Does the treatment of cancer give time to plan out for family? The maybe mindset for family. Do they give time to the family to just plan? Time. So yes, definitely. So nothing is an emergency there. You can, कुछ भी emergency नहीं होता जनरली इन केसेस में, until unless कोई एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है या कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, then we have to take certain steps immediately. But मैं नहीं मानता आज की डेट में कोई भी जो कैंसर ट्रीटमेंट्स ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट, कोई भी जो डॉक्टर्स एसोसिएटेड हैं, दे ऑलवेज डू अ वेल इन्फॉर्म्ड वर्क, बिकॉज कोई भी आजकल इतनी अवेयरनेस है, पेशेंट्स जागरूक हैं, और अच्छी बात भी है कि इट ईजीज आउट अवर टू वे कम्युनिकेशन. जब पेशेंट को भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है, तो हमेशा एक टाइम स्पैन जरूर मिलता है कि व्हेन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट, तो ऑलवेज देयर आर couple of days, a week or so when we start a treatment. Definitely there is. Sir, Vinita ji पूछ रहे हैं कि I have some breathing problem because of GERD and hiatus hernia. How can this be solved? These are secondary symptoms of hiatus hernia, and as I said earlier, I think ये जवाब हम पहले भी दे चुके कि if the hiatus hernia is big, or if it is recommended, you should undergo a surgery. If your weight is more, you should lose a weight. You should avoid the substances which are causing you cancer, and you should seek a professional advice with your gastroenterologist or a physician involved in your case. बिल्कुल. विनीता जी एक और चीज पूछ रही है सर कि the air gets trapped anywhere in the body. On pressing any body part, burping happens. What is the issue? This is more of we consider it as an gastrosomatic disorder sort of thing, because it, to be a honest dead truth, that it doesn't happen. It's just your own belief that it happens. So Rajesh ji पूछ रहे हैं, sir, I am suffering from burning tongue for last 1.5 years. It seems sometimes due to allergy or sometimes due to gastric disorders. What do you suggest? I think, honestly speaking, it's a specialty which belongs to an ear, nose, throat surgeon. You should seek an advice from a good ENT surgeon. Most likely, it looks like that you have a mucositis, but until unless I see you, I can't tell you. Mucositis could be an allergy to any certain food, or if you are smoking or having a regular consumption of alcohol. You can avoid certain substances. You can see in your diet what is triggering that thing, and you can take some. आजकल there are some, अभी आजकल बहुत सारे अच्छे mouth probiotics भी available हैं. So you can try that mouth probiotics, and antioxidants आप ले सकते हैं. सर विनीता जी आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाह रही है. आई एम अनेबल टू ईट नट्स, बीन्स, मैदा, मैदा की कोई भी डिश, बेसन की कोई भी डिश, एंड वेरियस पल्सेस एंड मेनी थिंग्स सिंस मेनी इयर्स. आई हैव macular degeneration
mus- mus- muscular degeneration and skin disease called lichen amyloidosis. Are these diseases because of stomach issues? Sorry, I was just. I hope you got it, sir. Should I repeat? What was the initial part? What was the initial part? So he is unable to eat lots of nuts, beans, Okay, maida. okay, okay, right, right. So he's saying So, she has muscular degeneration and skin disease because of lichen so amyloidosis. So basically, she needs to get, really take a bottom line treatment from any good gastroenterologist. She should visit a good gastroenterologist and start seeking a proper advice and a proper treatment, because she's mixing up a bit of things which she see this is related to this, which is a normal psychology for all the patients, all of us, that we think that it's related to that. Probably I cannot assure that you have problems because of the nuts and all. You can't be able to digest. But हाँ, अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि ये चीज़ से मेरे को प्रॉब्लम होती है कि नहीं, मेरे को ये कंफर्म करना है, तो इसके लिए आजकल एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं फूड इंटॉलरेंस टेस्ट, फूड एलर्जी टेस्ट. तो वो आप एक दिस इज अवेलेबल एट एनी वेरी गुड हॉस्पिटल, दे आर डूइंग दैट, एंड आप वो करा के उसमें देयर विल बी 400-500 फूड प्रोडक्ट्स वेयर यू कैन टेस्ट योर body which product doesn't suits you. So you can be also sure that whether you should have this product or you should not have this product. That's true. That's true. So Durga ji sir आपके साथ share करना चाह रही है that she has also advised 2 of her patients to prepare their will and get the family secured before going for the treatment. So Durga ji is also a doctor, so she's here with us. She's just discussing Yeah. her 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 journey of dealing with patients with you. So she is saying that she has 2 patients with cancer, and she has told them to prepare their will and come back after securing their families. So just sharing that with you. So Oh, now right, right. coming back to GI cancer, sir. I'm pretty sure the way treatment goes, it's a lot of challenging for the families as well as patients. What do you suggest to the families, जिनके patients cancer से deal कर रहे हैं, जिनके family member cancer से deal कर रहे हैं, something for those families from your end? Yeah, it's like a common saying. We always say, whether it's a professional life, whether it's a personal life, we personally or in the family, we always go through some sort of hardships. So it's like a general thing that, like, say, if somebody has been diagnosed in a family with a cancer, so it's equally important for the family members to maintain their good health at the same time too, so that they can support. It's like, even when you are flying in an airplane, they always give you security instructions that if the airplane is having a low pressure of oxygen, first wear your mask and then That's true. Then help say. somebody else. So it's something like that you have to keep your health up to mark. It's not that you can't quit certain days of your working. It's not that you can't be with your own ones. So definitely it's a combined effort in any part of this kind of a long disease. So it's important that the relatives of the family also stay calm and practice their routine lifestyle, like at least figure out some time of their lifestyle which has changed because of this, by eating regularly and going for a walk or something. So they have to find out time for themselves also, right? That is very nice, sir. And thank you so much, sir, हमारे साथ इतना डिटेल में डिस्कस करने के लिए टॉपिक, और इतना अच्छे से सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए. विनीता जी, आपको थैंक्स अ लॉट डॉक्टर बोलना चाह रही हैं. Thank you Thank for you so much. everyone for listening me so patiently. नहीं sir, thank you so much for taking out time. Just a small appreciation certificate from our end for the kind of efforts that you have given Oh, in, sir. that's amazing. Thank you so much. Yes. So can you please, yes. So this is the certificate from our end. Thank you so much for taking for taking Yeah, out sure. time for us, and sharing all of these insights with us. Thank you so much. Mhm. Right. सर, जितेंद्र जी का एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए. सर, व्हाट इज द Please. डाइट प्लान टू बी फॉलोड फॉर in general, what do you think is a diet plan should be followed for people? For what?
So, in general, on a daily lifestyle, somebody to stay prevented from the diseases, what do you think is the diet plan people should follow? It's like you maintain a. It's not only the diet. I will say that a Sorry, diet sir. which is Sir, Jitendra sir is asking for cancer patients. I'm sorry. So he just mentioned for the cancer patient, what is the diet plan should be followed? plan actually varies basically sometimes because what kind of cancer of the patient is मतलब कौन सा patient का कौन सा cancer है उस पर भी बहुत vary करता है but in general generally हम cancer patients को we keep them on high protein and a bit of soft diet so they can easily digest it and as I said that it should have a lot of antioxidants some people mix it with berries and all that stuff or sometimes we give a lot of supplements also protein supplements also तो आई थिंक हमारी डाइट जो डाइट वाला जो पार्ट होता है इन जनरल आई एम टॉकिंग बट nowadays our dietitians who are really specialized in giving a cancer diets and all they are really amazing patients वो patients के taste के हिसाब से they formulate the diet so but in general if you ask me in general it is more of high protein and a decent amount of carbohydrate to give you immediate energy and a lot of antioxidants which help you to go through the which help in the cell repair basically जो आपका damaged cell है उसको थोड़ा repair करेगा and protect the cells also जो normal cells हैं so that is the diet generally Diet we plan. don't give very high fat diet to the cancer patients Okay. yeah So Vinita is also asking, my mother died of pancreatic cancer. Am I also at risk? uh, genetics is the cause but it's a very small cause in pancreatic cancers still now the pancreatic exact causes of pancreatic cancers has not been defined but there are multiple mutations which has been identified I would suggest that कि there is and सबसे बड़ी बात ये है कि pancreatic cancers के लिए कोई ऐसा screening program भी नहीं है तो the symptoms like अनस्पेसिफाइड abdominal पेन abdominal डिस्कम्फर्ट बैक में दर्द रहना कमर में दर्द रहना या इंडाइजेशन शुरू होना या आपको ऐसा लगे कि आपको एपेटाइट कम हो रहा है वेट लॉस हो रहा है तो दीज आर द टेस्ट एंड मे बी sometimes a screening ultrasound annually could help you at least to see whether you have something which is developing something in the pancreas if you feel if there is any sort of suspicion we can always get a you can always consult a specialist and get a CT scan done. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So Kailash ji कह रहे, thank you so much sir for a great session. So Thank you. yes, thank you sir for joining us. Thanks Ayushi for being a wonderful host. I mean it's been second time with you. I know it's been a lot of years we start. Thank you so That's much. true. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you so much, everyone, for joining us today. I hope we could cater to all of your questions. And in case any, please reach out to us. We will love to cater to them as well. So that's all for today's episode of Med Talks Med Talks by Dr. KK Agarwal. Thank you so much. See you again in the next episode of Dr. KK's Med Talks at 7 p.m. tomorrow. Thank you so much, sir. Thank you Thank so you much. so much. Thank you.